In the city of Lahore, Pakistan, resides a secret. Welcome to the Diamond Market, open only 2 hours every night. During these hours, the police officers turn a blind eye to the activities going on. The women who work here say it's a place where men come to enjoy music and dance. जो कल्चर है हमारा वो करते हैं हम, वो गाना सुनते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। डांस ही होता है यहाँ पे 11 से, उसके बाद दुनिया की क़यामत आ जाए कुछ नहीं होएगा। But others are more forthcoming. मेरा नाम है नरगिस और मैं टंसाली अंदर रहती हूँ और मैं एक वाइफ हूँ। Nargis lives in a 2-room apartment on this street with her 2 daughters and a son. From the windows of her house, Nargis can see the dome of Badshahi Mosque, which borders the red light area. In Pakistan, where a majority of residents are Muslims and modesty is a part of their faith, a flourishing red light district in plain sight is a true paradox. It's the great irony of Lahore that sitting in the courtyard of the city's most important mosque, one can hear the sounds of women singing and dancing. Even walking through the red light area, one can see burqa-clad women. Indeed, many of the prostitutes cover themselves up when they leave their homes. Nargis says this area exists because politicians turn a blind eye to the activities going on here and the police happily accept bribes to stay silent. ये पुलिस वाले भी जो है ना खाने के गाहक होते हैं बस। इनको पैसे मिलते रहे, भत्ता मिलता रहे तो सही है, नहीं मिलता रहे तो ये आके रेड डाल के पकड़ लेते हैं। It's 9 o'clock at night. Time for Nargis to begin getting ready for work. She spends a good deal of time doling up. किराया देने होते हैं, बिल देने होते हैं। मजबूरी के साथ हम ये काम करते हैं, हमें कोई शौक नहीं ये काम करने का। Though pressed for time, she also helps her daughter dress up. In Nargis's case, her family forced her into this field. She was an excellent dancer and used to earn money by performing at weddings and other functions. मैं डांसर थी बहुत अच्छी, तो लिहाजा मैं इस फील्ड में पड़ गई। मैंने अपने घर वालों को बहुत कमा के दिया। Nargis stopped dancing when she met her husband, but marriage did not prove to be the respite she was hoping it would. मैंने शादी की और उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। मियाँ मुझे मारता था, सारा दिन मैं घर का काम करती थी। मियाँ मुझे मारता था, बहुत मारता था मुझे। To escape his beatings, Nargis fled from her house with her children, landing up in the diamond market, where she began prostituting herself for the first time in 2000. इस फील्ड में मैंने अपने के कारोबार शुरू किया। अपने पाँव के ऊपर मैं खड़ी हुई। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पास तो एक चादर भी नहीं थी। मैं एक चादर बिछा के मैं अपने बच्चों को लेके मैं सो जाऊँ। The paradox of the red light area is also the paradox of Nargis's life. She says she is a proud Muslim. In the holy month of Muharram, in which the grandchildren of Prophet Muhammad were martyred, Nargis and all other prostitutes in the area stop working. They go to a shrine, pray to Allah and ask His forgiveness for their sins. Nargis justifies it to herself by saying she has no choice. Though Nargis doesn't pray 5 times a day like Muslims are supposed to, she occasionally sits down and prays to Allah, asking Him for His forgiveness. वो फिर ये करेगा, रब से माफ़ी मांगेगा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं कर रहा हूँ मुझे माफ़ी दे दे, ये गुनाह मैं कर रहा हूँ मुझे माफ़ी दे दे। लेकिन मजबूरन उसे करना ही पड़ता है अपनी भूख की वजह से, अपनी हालात की वजह से। As a Muslim, Nargis has sketched boundaries for herself. She refuses to employ any girl under her because she is afraid her God would not forgive her for involving anyone else in this profession. एक लड़की मेरे पास है, वो मुझे कहती है मुझे रख ले। मैंने उसका देखा, उसकी उम्र भी बहुत छोटी सी थी। मैंने कैसे मैं रख लूँगी, इसकी बद्दुआएं मुझे लग जाएंगी। लेकिन जो लालची लोग होते हैं वो रख भी लेते हैं, उनकी कमाइयाँ खाते हैं, उनको चलाते हैं, आगे पेश करते हैं। लेकिन जो आल औलाद वाला हो किसी बेटी की कमाई नहीं खाएगा। But despite hating her profession, Nargis says she is grateful that she is independent and can earn her own income. On an average, Nargis makes less than 400 rupees a night. को आके हमसे पूछता है कितने पैसे, हम कहते हैं जी हम ये लेते हैं, 200 लेते हैं, 500 लेते हैं, यहाँ से 300 लेते हैं। Nargis deliberately doesn't teach her children Islam and forbids them from going to school. She is afraid they will reject her if they learn too much. इसलिए स्कूल पढ़ना चाहता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी माँ को खिलाऊँ, बहन भाइयों को। कल से मेरी शादी भी होनी है, अपने बच्चों को भी मैंने खिलाना है।
मैं ना बड़ी होकर स्पैन बनना चाहती हूँ। हम ये गंदे महल्ले में नहीं रहना चाहते। हम का अपना सब्जा या ये मॉडर्न टाउन मकान हो तो हम वहाँ पे खुश हैं रहने के लिए। यहाँ कहीं अच्छा सा घर ले लूँ, मेरी बहन यहाँ बुरा काम करे, यहाँ कल से ही इसने भी बड़ी होना, ये ना बुरा काम करे जो मेरी माँ लगी है।